Hello बच्चों, let's read this question. A test tube along with calcium carbonate in it initially weighed 30.08 grams. A heating experiment was performed on this test tube till calcium carbonate completely decomposed with evolution of a gas. Loss of weight during this experiment was 4.40 gram. What is the weight of the empty test tube in this experiment? एंड दीज आर दी फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन टू अस. सो जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अकॉर्डिंग टू दिस मास जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन रहता है, केमिकल रिएक्शन इज दैट जिसमें कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो हमारे पास मास होता है ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, विच इज कि जो मास है वो कंजर्व रहेगा प्रोडक्ट. Now, according to the given question, जो हमारे पास chemical reaction involved है, we will consider the example of only that one. Calcium carbonate decompose होती है calcium oxide and CO2 gas में. Now let us see the mass for the calcium carbonate. जो हमारे पास calcium carbonate है that has the calcium, and calcium के लिए जो हमारे पास mass रहता है that is 40 units plus mass for the carbon. mass for the carbon is 12 units, and जो हमारे पास ऑक्सीजन है that has the mass of the 16, and 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ. now we will add this. तो ये हमारे पास आएगा 40 plus 12 plus 48. so by addition we will get 100 grams. एंड जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है फॉर दैट इट विल बी 40 plus 16 for oxygen, so it will be 56 gram. and CO2 के लिए 12 for the carbon and 2 ऑक्सीजन है, so 2 multiplied to the 16, so it will be 12 plus 32, hence 44 ग्राम हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. सो हियर वी कैन सी जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके लिए 100 ग्राम है, एंड प्रोडक्ट में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके लिए हम अगर देखेंगे तो 56 प्लस 44 अगर हम करेंगे सो इट विल बी इक्वल्स टू द 100 ग्राम. हेंस वी कैन सी जो हमारे पास मास है वो कंजर्व रहेगा. mass of the reactant is equal to the mass of the product. Now let us discuss more about this. According to the given statement जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, in this test tube we have the calcium carbonate, and it is given that weight of जो हमारे पास weight है टेस्ट ट्यूब का, टेस्ट ट्यूब प्लस weight of calcium carbonate that is equal to the 30 point, this is equals to the 30.08 grams. and according to this given हमारे पास जो equation है, in this we can see that 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए we need 100 ग्राम of the calcium carbonate. now here we are considering only gas because according to this experiment जो टेस्ट ट्यूब है कैल्शियम कार्बोनेट जो है completely डिकम्पोज हो जाता है एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, और जो वो लॉस ऑफ वेट होता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट दैट इज 4.40 ग्राम. लॉस ऑफ वेट इन एक्सपेरिमेंट मीन्स जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में है, सो गैसियस जो प्रोडक्ट होगा वही लॉस होगा.
So from here we can write when CO2 produced is 44 ग्राम। तो उसके लिए जो कैल्शियम कार्बोनेट नीडेड है, कैल्शियम कार्बोनेट needed is equal to the 100 grams, and according to the given statement CO2 जो प्रोड्यूस हुआ है that is 4.4 gram is 4.4 grams। so उसके लिए जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट चाहिएगा हमें, that we can find with the unitary method। so 100 divided by 44 and 4.4 के लिए चाहिए तो it will be multiplied by 4.4, so ये cancel हो जाएगा। so here we will get it will be 0.1, so 100 multiplied by the 1 upon 10, so we will get 10 grams। now जो हमारे पास total mass given है that is 30.08 gram, that is of the mass of calcium carbonate or weight of the empty test tube, and we have to find the weight of empty test tube, weight of empty test tube। so जो हमारे पास total mass है उसमें से हम कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमने फाइंड आउट किया वो माइनस कर देंगे। 30.08 में से 10.0 grams को माइनस करेंगे, so we will get 20.08 grams। so by this we can say जो टेस्ट ट्यूब का वेट है that will be 20.08 grams and that is the option A, 20.08 grams। let us mark the option A as the correct answer and B, C and D are incorrect। hope you understood it well, best of luck।